Please be seated. As we move forward with this ceremony, let us seek the blessings of Allah Almighty. I now request Hafiz Liaquat Ali for the recitation of the Holy Quran. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ولستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم तर्जमा हमने ज़मीन को फैलाया उसमें पहाड़ जमाए उसमें हर नौ की नबादात ठीक ठीक नपे तुले मिकदार के साथ उगाई और उसमें मैशत के असबाब फराहम किए तुम्हारे लिए भी और उन बहुत सी मखलूक़ात के लिए भी जिनके राज़िक तुम न हो कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके ख़जाने हमारे पास न हो और जिस चीज़ को हम नाजिल करते हैं एक मुकर्रर मिकदार में नाजिल करते हैं सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इलाहुल आलमीन इस चमन को हमेशा के लिए सरसब्ज़ और शादाब फरमा इलाहुल आलमीन इस चमन के अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के मसाइल को हल फरमा इलाहुल आलमीन इस चमन में बसने वालों की हिफाजत फरमा आसमानी आफतों से ज़मीनी ज़िलज़िलों से हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबी अजमईन आमीन आमीन Thank you, Hafiz Liaquat Ali, for the recitation of Holy Quran. Moving forward, I believe no one arrives at a moment like this without the help and support of great people. Please enlighten me while I take some time to acknowledge and thank them. Here we have with us today His Excellency Prime Minister Mia Mohammed Shahbaz Sharif, Her Excellency Ms. Pang Chun-Xue, Chinese Charge State Affairs to Pakistan, Honorable Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, Honorable Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah, Honorable Minister of Power Khurram Dastagir Khan, Honorable Minister of Energy Mr. Imtiaz Sheikh, Honorable Managing Director Private Power and Infrastructure Board Shahjahan Mirza. Welcome and thank you for being here with us today. Today is the day of celebration of our Block 1 to honor our history and traditions while glimpsing at the future with confidence and hope. Here we are honored to have with us the Managing Director of Pakistan Power Infrastructure Board, who will come on stage and give us an introduction to the event. Please. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister of Pakistan, Foreign Minister, Chief Minister Sindh, Energy Minister, Federal Government, dignitaries, parliamentarians, and guests,
It's a great pleasure and honor for me to welcome you on this event, which is a historical moment marking the inauguration by the Prime Minister of 3 projects. One is the 330 megawatt Thal Nova power project based on Thar coal, for which the Prime Minister Sahab has already done the plaque opening. The second one is the 7.8 million ton mine project at Block 1, which is being done by SSRL, Sino-Sindh Resources Limited, which is a joint venture of Chinese companies. And the third one where we are standing now, this is the 1320 megawatt Thar coal-based power project with the name of Thar Block 1 Power Company. And the main sponsor is Shanghai Electric, which is one of the largest corporations in China. So with these projects, we have actually completed the first round of completion of the CPAC Thar coal-based project. And the total investment in these 3 projects is around 3.6 billion. The main sponsor of these projects include HUBCO, Engro, CMEC from China, Shanghai Electric from China, House of Habib, Fauji Fertilizer Company, Lucky Electric Company, and Thal, House of Thal. So these sponsors have put up a lot of effort and a lot of money actually to bring these projects in reality. Honorable Prime Minister Sahab, while the event is a testament to the long-drawn hard work and dedication of all the individual and institutions at the federal and provincial level, this is basically a testimony that we can achieve every goal if we work together as a single unit and as a nation. With your permission, sir, I would like to touch upon briefly some of the key events which has actually brought us here at this success level. This reservoir, Thar reservoir, was first discovered in late 80s, and in 1990s, the Geological Survey of Pakistan and US Geological Survey confirmed these, these reservoirs. In fact, these are the low-quality lignite coal reservoir, which can mainly be used for the power generation and maybe in the brick kiln. This is not a very high-quality coal, which can be put to other industrial uses. PPIB, being a one-window facility on behalf of the federal government, has started effort in the early 2000 to bring these power generation on Thar coal to the reality. The first LOI, which was issued in 2008 by PPIB under the regime and cooperation and support of the Sindh government gave on Thar Block 2 this lease to Hussain Enterprises, but unfortunately this was not successful and the effort could not mature. Similarly, in order to facilitate again the Thar coal project, PPIB on the direction of the federal government and support of the then Ministry of Water and Power prepared an indicative tariff and submitted it to NEPRA, which was approved by NEPRA in 2008. But again, this effort was not successful because Pakistan do not have any experience of coal mining or coal power generation. So after learning from all these experiences, Sindh government set up Thar Coal and Energy Board in 2008, and this was a giant board where the Sindh government and the federal government was represented. And board started looking at what could be done actually to exploit this huge reservoir in Pakistan. So the next step was that, I think that was the first major step, that Sindh government made a joint venture with the Engro Corporation, and this is a successful model of public-private partnership, which actually started working on this scheme. And in between 2012 and 2014, there was a G2G arrangement between the government of Pakistan and government of China, under which the Energy Framework Agreement was signed in November 2014, which actually kick-started the whole process of Thar power generation. So the major credit goes to the government of China, CPAC initiative, government of Pakistan efforts, and all the stakeholders in this process. Again, there was some hiccups, some problems. So there was a new policy announced in 2015, where from the federal government side, PPIB took the lead, and all other stakeholders were consulted. Again, but it was realized that the tariff determination and tariff negotiation is a long-drawn process. So PPIB, on directions of the federal government, again prepared an upfront tariff, which was submitted to NEPRA in 2013, which was approved by NEPRA in 2014.
And this is the upfront tariff under which all these CPAC power projects have been set up. So this is the brief story of the effort which have been taken. And these efforts actually show that when we work together in collaboration and in hand-to-hand between the provinces and the federation and the other stakeholders, we can achieve any difficult goal. So now today we are successful together in implementing 3,300 megawatt power projects based on Tharkol with a total investment of around 17 billion. The project includes 660 megawatt Angro Power Gen, which was the first one to be commissioned. The second is Thar Energy Hubco, which was commissioned and inaugurated by the Prime Minister in October last year. And then there is a Lucky Electric Power Project of 660 megawatt, which is not located at Thar as a mine mouth project. It is located in Karachi at Port Qasim. The next two projects which have been inaugurated today, these include Thar Block 1 Shanghai Electric 1320 megawatt and Thal Nova 330 megawatt. So with this CPAC initiative and the support of Chinese government, we have been able to achieve all this success. So these 3,300 megawatt projects involve an investment of $6.9 billion, and they are likely to produce 22 billion units of cheap and affordable energy. This will actually save 550 billion per annum to the country on the import of fuel and a foreign exchange of around 2 billion per year, which is being used for the import of oil and the fuel. In this context, today we are, and the world is concerned about the climate change and the environmental impact. So I am glad to announce that all these projects are compliant with the very stringent World Bank and IFC environmental standards. So the good news is we are not polluting the environment. Basically, we are well within the World Bank guidelines. Sir, with this, I stop here. Thank you very much, sir. Pakistan Zindabad, Pakistan Cheen Dosti Paindabad. Thank you, sir. Thank you, Shahjahan Saab, for being on the stage. And moving forward, I will request Chairman of Tharkol Block 1 Integrated Project, CEO of Tharkol Block 1 Power Generation Company, Mr. Mang Dong Hai, please come on stage and show your objectives, please. Thank you. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Foreign Minister, Your Excellency, Madam from Pang, from Chinese Embassy, and Honorable Chief Minister of Government of Sing, my friends, ladies and gentlemen, it's our great honor to have you here to witness the inauguration of TAR Block 1 Integrated Project. I would like to take this opportunity to share our adventure story in Thar and Pakistan with you. Shanghai Electric is a state-owned and listed company mainly focused on power equipment. Our Thar story begins from year 2014. The first time I went to Thar is December of 2014. At that time, I see nothing here but sand and camels. There were many questions and doubts about the project at that time, whether they really have coal and ground, whether Shanghai Electric will be capable to bring this giant project to success. Will we get enough and timely support from government of Pakistan, and so on and so forth? I have to say, this is never an easy project. Besides the insufficient site construction condition and inadequate natural condition, we met tremendous difficulties during the construction period. The one influenced us a lot is the COVID situation. The global pandemic lasted for 3 years, which is exactly the 3 years for our construction. Your Excellency, it's like a black humor to say that this project we finalized with steel, concrete, and a mask. Another huge challenge is financing. Majorly due to stream of global anti-black energy action and a change in macroeconomic situation, we are still a project haven't achieved its financing closure, which means Shanghai Electric during this project
this far since 2019 with almost the fund from our own self. Considering the total investment amount of this project is up to $3 billion, it's quite clear to see the financing pressures. Well, nevertheless, today we gather together here to celebrate the inauguration of TAR Block 1 integrated project. The project achieved its commercial operation date in 5th February 2023, and now ranking highest in the latest merit order among all coal-fired basis power plants in this country. We may regard this as a success, and this success is definitely not an accident. It bears reasons. Firstly, I'd like to take this opportunity to express my sincere thanks to the government of Pakistan and China. It is no doubt that without the support from the government and the China-Pakistan economic corridor, this project will move no forward but remain a piece of paper. I give my especially thanks to those officers who delivered their precious effort to us in our darkest moment, like Your Excellency, Mr. Prime Minister, and your office, and also the government of Sing, and especially the Chief Minister, and also the Minister of Energy and other ministries of both federal and Sing government, NEPRA, PPIB, CPPG, NTDC, TCEB. It's really great to have friends like you here in Pakistan. Secondly, SEC introduced the best technology here in this project, which fits the utilization of charcoal. The efficiency of the plant easily exceeded its benchmark, which is 39%, which also set a new record in Pakistan. Compared with the previous benchmark 37, this 2% improvement will save around $630 million for Pakistan in its life cycle, although a higher initial investment is required. We hope this project can be a benchmark for the further utilization of charcoal. Besides the technology, I also want to share a story about the team of the builders in TAR Block 1. These men on this slide are the key personnels of this team. Today is my 306 days in Pakistan for this trip. Yeah, seems quite long and make my family and I myself sad. However, the project director of Shanghai Electric, Mr. Yao Fujun, he spent 552 days here in Pakistan on one go. Project director of Anhui Power Construction Company, Mr. Sheng Tianshen, spent 655 days here. And project director of Henan Province Second Building Engineering, Mr. Zhang Chong, spent 753 days on one trip. Project directors of Hubei, Mr. Dong Pengfei, spent 949 days. And even our supervisor, Mr. Qiu Zhongdong from Shandong Chengxin, he spent 915 days here on one trip. My story fade into nothing in front of them. Those gentlemen are not the only very few examples of our site team. And actually, not only Chinese, but also our Pakistani staff also have to stay a long time in this desert. Those Pakistani young talent, after work in this project for months and years, already become qualified engineers. And I firmly believe that they will be the main force for further development of Pakistan power sector in the future. It is the contribution and sacrifice of these men and women with families make the success of this project achievable, for which I give my best regards. Your Excellency, today the difficult story comes to its glory moment. Some problems, although remains there. For example, I am badly need to your help, ladies and gentlemen, in the future to close my financing. And the power and coal tariff determination, land acquisition, especially disputed land and government land, and also the payment and the PPA, and also security arrangement, and so on and so forth. However, this project have already created 12,000 direct job opportunity, been revised $138 million tax, and we spend $1.3 million on CSR. Standing here, we do believe that there is a big potential in TAR.
The company is now targeting to make ourselves as an outstanding Pakistani energy company, and believe that together we will bring more light in Thar and Pakistan, and together we make our future. Thank you, Your Excellency. Thank you. Thank you, Mr. Meng Donghai, for being on the stage. Moving forward, ladies and gentlemen, we have with us a special guest, Chairperson of Shanghai Electric, Madam Leng Wei-Qing from China, who will be joining us through recorded video and sharing her thoughts and experience on working with Together Pakistan. Thank you. 尊敬的女士们、先生们，大家好！非常高兴今天能与大家在线共同见证塔尔项目正式投运的荣耀时刻。感谢巴基斯坦各级政府对上海电气的信任和支持。 感谢中国政府，特别是驻巴使领馆对上海电气在巴建设项目的关心、指导和帮助，还要感谢项目上每一位中巴建设者，没有你们的坚定意志和顽强拼搏，就没有今天项目的成功投运，向你们致以崇高敬意。塔尔项目是由习近平主席建议的 中巴经济走廊重点能源合作项目投运后，将为超过400万户巴基斯坦家庭提供持续、稳定、清洁、优惠的电力，也将为巴基斯坦改善能源结构、增强能源安全、降低外汇风险做出积极贡献。上海电气积极响应中国“一带一路”倡议，与巴方人民共享机遇、 共赢挑战，共谋发展，克服了全球疫情爆发、交通阻断、项目融资困难等挑战，依靠优秀的项目团队、优异的能源技术和优质的产品设备，成功完成了项目整体建设，顺利进入商业运营，以实际行动向“一带一路”倡议和中巴经济走廊10周年献礼。 自1993年，上海电气为木扎法哥发电站提供主机设备以来，我们便一直积极投身巴基斯坦的能源建设。我的同事们骄傲地告诉我，巴基斯坦每个核电站中都有上海电气提供的设备。同时，我们还为巴基斯坦电网和其他电站项目的建设提供了可靠的能源装备支持。 我听了非常的高兴和自豪。我坚信，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。希望大家戮力同心，同舟共济，以今天为新的起点，进一步深化合作交流，携手共创中巴能源发展的美好未来。愿中巴友谊万岁！ Moving forward with the ceremony, I would like to request Her Excellency Ms. PakSunNews, Chinese Charity Affairs to Pakistan, please come on stage and share her thoughts. Thank you. Honorable Prime Minister, His Excellency Mr. Shahbaz Sharif, Honorable Foreign Minister, His Excellency Mr. Bilawal Bhutto Zardari, and Honorable Minister for Power, His Excellency Mr. Ghulam Dastgir Khan, and Honorable Minister Salik, and His Excellency Mr. Syed Murad Ali, Chief Minister of Sindh Province, and His Excellency Mr. Tausif Faruqi, NEPRA Chairman, and I also see many friends here, so I do not waste your time to name them one by one. And from Chinese side, Mrs. Leng Wei-Qing, Chairperson of Shanghai Electric Group, and Mr. Meng Donghai, Chairman of TAR Block 1.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, a very good afternoon and assalamu alaikum. It is a great pleasure for me to attend today's ceremony in Thar. First of all, on behalf of the Chinese government, I would like to extend my congratulations to the successful COD of the Thar Block 1 Integrated Coal Mine Power Project, which is a new remarkable achievement of CPEC Corporation, injecting strong impetus to the high-quality development of CPEC and bringing more benefits to the people. I would like to thank Thar Coal Power Block 1 Power Generation Company and the Sino-Sind Resources Company and the parent company Shanghai Electric Group for your great efforts made. I would like to thank Honorable Prime Minister for your consistent devotion and firm support to the bilateral cooperation, and also to my thanks also to the Honorable Ministers present here. And your good guidance is essential to the smooth development with successive accomplishments. And my appreciation also goes to the Pakistan government for facilitating the construction of the project, and also especially for the Pakistan Army, who have provided security protection for the implementation of the project. The Thar Block 1 Integrated Coal Mine Project is a key energy project under the CPEC framework, and it will provide electricity for 4 million households, bring significant social and economic significance in reducing fuel imports, saving foreign exchange reserves, optimizing power supply structure, and enhancing energy security. It has also provided more than 18,000 direct employment opportunities for the locals, with a tax payment of 120 million and CSR expenditure over 1.3 million. To address the flood disaster last year, the company provided relief packages worth more than 9 million rupees to the local community, and it also constructed the roads for the surrounding villages to improve the traffic infrastructure, planted hundreds of trees to make the environment more friendly, and also set up the first Chinese language training center in Thar, and delivered scholarships and training opportunities to enhance the youth education. I'm really happy to learn that 7 girls and 22 boys have completed their SHK Level 1 Chinese language courses. And ladies and gentlemen, this year we are celebrating the 10th anniversary of BRI and CPEC. As a win-win cooperation, CPEC has brought a total of 25.4 billion in direct investment and 17.55 billion in revenue and 2.12 billion in taxes, and altogether created 192,000 job opportunities for the Pakistan people. And it has contributed to lay a foundation for Pakistan's industrialization, modernization, and connectivity to the region. In the future, the CPEC cooperation will focus on industry, agriculture, science and technology, and etc., and will increase in Pakistan's export capacity and competitiveness. Last but not least, नाज़रीन, थरपारकर में 1320 मेगावाट शंघाई इलेक्ट्रिक थर और 330 मेगावाट थल नोवा थर मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब इस वक्त जारी है। इसका इफ्तिताह किया जा चुका है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इन मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब में मौजूद हैं। थर पार्कर में 1320 मेगावाट शंघाई इलेक्ट्रिक थर और 330 मेगावाट थल नोवा थर मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। 3 अरब 53 करोड़ डॉलर की मजमूई। Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah, please come on stage and have a speech with us. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Prime Minister Pakistan Mian Mohammad Shahbaz Sharif Sahab, Foreign Minister Pakistan, Chairman Pakistan People's Party Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Minister Power Ram Dastagir Sahab, Chaudhry Saleh Hussain Sahab, Imtiaz Sheikh Sahab, Ms. Peng, Deputy Head of Mission China, यहाँ पे बैठे हुए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, ना तनख्वाह लेने पर ताहियात नाअहल होता है तो फिर सवाल निजाम इंसाफ पे उठता है। अगर आप इस तरह की वीडियोस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो निजाम इंसाफ पर फिर सवाल उठेगा। खुदा के लिए पाकिस्तान में 2 कानून नहीं, 1 कानून रहने दें, सबको एक जैसा ट्रीट करें। और उसके बाद ये सारे मामले, और आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है। पार्लियामेंट किसी भी चीज पे बहस कर सकती है। इलेक्शंस पे अगर पार्लियामेंट ने बहस नहीं करनी तो किसने करनी है? इलेक्शंस करवाने का फैसला क्या पुलिस करेगी, महकमा ज़राअत करेगा, महकमा तालीम करेगा, या पार्लियामेंट करेगी? पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट बनाई किस लिए गई है? अगर किसी सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो दूर कौन करेगा? क्या पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन की बुनियाद रखना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में हमेशा पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, मुतनाज़े रहे? या ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे, इस्तेकाम दे, उसकी मईशत से लेके गरीब का चूल्हा चलाए? सो पाकिस्तान में इंतखाब कब और किस वक्त होना चाहिए, किस कानून, किस असूल, किस ज़ाब्ते के तहत होना चाहिए, उसका फैसला पार्लियामेंट ही कर सकती है। अगर पार्लियामेंट ने ये भी फैसले नहीं करने तो पार्लियामेंट को ताला लगा दे। पार्लियामेंट को ताला लगा दे, पार्लियामेंट को इस तरह करें, घर भेज दे। पार्लियामेंट का काम अगर ये भी नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकती तो फिर ये तकरीरें और इनको तनख्वाहें देने का कोई फायदा नहीं। एक ही हुक्म जारी कर दे कि पार्लियामेंट आज से उसको ताला लगा दिया जाएगा। जब तक हम पार्लियामेंट में हैं, जब तक हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, अपनी आवाज उठाएंगे। लोगों की राय और लोगों और पाकिस्तान का मुफाद उस पार्लियामेंट में डिस्कस होगा और उसकी जो करारदाद होगी, अदारे उस पे मनोअमन अमल करने के उन पर पाबंदी है, वो उसके पाबंद हैं। पार्लियामेंट जो हुक्म जारी करेगी वो सबके लिए हुक्म मानना जरूरी है। तो मेरी एक दफा फिर गुजारिश है, मुतनाज़े वीडियो का तहकीक करवाएं, नहीं तो तारीख में एक और काला धब्बा निज़ाम इंसाफ। पाकिस्तान में 2 नहीं 1 कानून रहने दें, ये कहना था मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तल्लाल चौधरी का। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का राज होना चाहिए, आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट ने इंतखाबात के हवाले से फैसला करना है। इंतखाबात कब, किस वक्त और किस कानून के तहत होंगे, ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। जब तक पार्लियामेंट के रुकन हैं हम आवाम की आवाज़ उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट का फैसला सबको मानना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तल्लाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 नहीं 1 कानून होना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तल्लाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 नहीं 1 कानून रहने दें। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है और इंतखाबात के हवाले से पार्लियामेंट में बात हो सकती है। पार्लियामेंट ही को ये इस्तेहकाक है। मुझे मलूज़े खातर है, मैं दोबारा कह देता हूँ, वीडियो इंतहाई परेशान कुन। अगर पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के जज साहिबान पर इस तरह का इल्जाम और इस इल्जाम को धोया नहीं जाएगा, उस इल्जाम की तहकीक नहीं की जाएगी, उस इल्जाम को ऐसे ही दबा दिया जाएगा कारपेट के नीचे,
تو سوال نظام عدل پہ اور لوگوں کا اعتماد نظام عدل پہ کمزور ہوگا، پہلے ہی بڑا کمزور ہے. یہ کوئی نون لیگ کے لیے اس پہ تحقیق ضروری نہیں ہے، عدلیہ کے اپنے وقار کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کی پوری تحقیق ہو. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ کے رکن ہیں ہم عوام کی آواز اٹھاتے رہیں گے. پارلیمنٹ کا فیصلہ کو ماننا ہوگا اور انتخابات کب ہوتے ہیں، کس وقت ہوتے ہیں، یہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. متنازع ویڈیو پر تحقیقات کرائی جائے، یہ کہنا تھا طلال چودھری کا. ناظرین، وزیراعظم محمد شہباز شریف اس وقت تھر پارکر میں 320 میگا واٹ شنگھائی تعاون تنظیم اور اس کے ساتھ ساتھ 330 میگا واٹ تھل نووا تھر منصوبوں کے افتتاح کی تقریب میں موجود ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. گاؤں کا ایک لڑکا مجھے ملا، سیال لڑکا ہے جو ادھر کام کرتا ہے، اور ابھی رحمت اللہ جمالی جو پچھلے 3 سال سے یہاں کام کر رہا ہے، انجینئر ہے، میرے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ادھر آ کے کام کر رہے ہیں. اور آپ سب کو جو بھی ورکرز ہیں ان کو خاص طور پہ مبارکباد ہے کہ آپ کی محنت کی وجہ سے ہی یہ ہم نے اچیو کیا ہے. آج آخر میں 2 چیزیں میں صرف کہوں گا. سب سے پہلے تو یہ پاکستان اور چین کی دوستی، اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی جو تھی پیشن گوئی یا اس کے بارے میں ریئلائزیشن یہ ابھی سے نہیں ہے. اور میں یہ کئی جگہ پہ کہہ چکا ہوں، آج مجھے ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، لیکن میرا خیال ہے تقریباً میں صحیح کہوں گا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1966 میں ایک کتاب لکھی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر، obviously ان کی گرفت تھی، اور اس میں ایک ایکسرپٹ تھا اور میں وہ پڑھتا ہوں کہ ایز آئی لک اراؤنڈ دی اونلی کنٹری which I see has the political and economic foresight along with Pakistan is the People's Republic of China. میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 67 میں کہا تھا کہ میں واحد پیپلز ریپبلک آف چائنا چین کو دیکھتا ہوں جس کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ الائن ہوتے ہیں، پولیٹیکل اور اکنامک. اور وہ بات جاری رہی ہے سکسیس گورنمنٹس میں. یہ ہماری دوستی اور مضبوط ہوئی ہے. جب ہمیں مشکل تھی تھر کے اندر تب بھی سی پیک کے تھرو چائنا آئے، انہوں نے ہماری مدد کی، اور آج یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے پاکستان کا اور چین کا، جس کی وجہ سے یہ تھر سے 2640 میگا واٹ بجلی ایویکیویٹ ہو رہی ہے. اور آخر میں جو یہ تھر کے لوگ ہیں ان کو، ادھر کچھ بیٹھے بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سارے پبلک ریپرزینٹیوز آئے ہوئے، ان کے لیے بڑی اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار دیم آل. ہمارے سارے ایم این ایز ایم پی ایز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاسٹ ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہیں، ہمارے نام ابھی لینا شروع ہوں، کسی کا بھول جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں نہیں لیتا. لیکن ان کی سب کی کمٹمنٹ ہے، تھر کے لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، اور یہ تھر کے لوگوں کا تحفہ ہے پاکستان کے لیے. تو ہم نے اس تھر کے لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. حکومت سندھ یہ کر رہی ہے. ہم نے کہہ دیا ہے کہ تھر فاؤنڈیشن جو ہم نے بنائی ہے، رائلٹی جو ہمیں ملے گی، اور ہم جو 54% شیئر ہولڈرز ہیں سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی میں، اس میں جو بھی پروفٹ آئے گا حکومت سندھ وہ تھر میں خرچ کرے گی. میں پرائم منسٹر صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسا، میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ڈائریکشنز پہ جب ہم نے پہلا پلانٹ ادھر انوگریٹ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ 200 یونٹ تک اسلام کوٹ تحصیل میں جو بھی بجلی لیتا ہے اس کی بل حکومت سندھ دیتی ہے، اور ابھی دے رہی ہے حکومت سندھ، وہ بل دے رہی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ تھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ تھر کے لوگوں کی کنٹریبیوشن سے ہی پاکستان روشن ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا. میں ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب آپ کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے اس خوشی کے موقع پہ تھر کے لوگوں کے ساتھ، اس کمپنی کے ساتھ اور حکومت سندھ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you so much, Chief Minister of Sindh, Sayyid Murad Ali Shah Sahab. Now, moving on forward, I will request
Minister of Power, Mr. Khurram Dastagir Khan, please come on stage and provide us with your valuable input on the venture. Thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Prime Minister, my distinguished colleague, Excellency the Foreign Minister, Bilawal Bhutto Zardari, my dear friend and brother, Honorable Chief Minister Sindh, Sayyid Murad Ali Shah, Honorable Federal Ministers and Provincial Ministers, Chief Executives of project companies, we are honored by the presence of the Deputy Head of Mission of the Embassy of China here, representative of project lenders, government officials, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is a momentous day, not just for the people of Thar, but for the entire country. And I'm honored to be standing here this afternoon at the inauguration of the 1320 megawatt coal-powered project at Thar Block 1 by Shanghai Electric and a 7.8 MTPA coal mine by SSRL at Thar Block 1, Sindh, Pakistan. Ladies and gentlemen, the launch of these projects under the China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, marks a milestone in development of Pakistan's power sector. With the increasing demand of electricity in Pakistan, the project will provide much needed relief to the people, but also especially those living in remote areas. The pluralist government led by Prime Minister Shahbaz Sharif is committed to achieving energy security, and this project is a step in that direction. It will help reduce the gap between supply and demand, improve the quality of life of the people in Thar, and accelerate the economic growth of the region as well as the whole country. These projects are and will be a living testament to the government of Pakistan and the government of Sindh's efforts to provide affordable and reliable electricity to the people of Pakistan. Congratulations to Shanghai Electric Group Corporation for their firm commitment towards timely completion of this project. It is commendable that the company has completed this project from its own resources. I also congratulate the SSRL team for their commitment and completion of mining project before estimated timelines. This partnership reflects the strong ties between Pakistan and China. I also thank the project team for their hard work and dedication. The project was completed on time despite challenges posed by COVID-19. Ladies and gentlemen, we appreciate the government and the people of China for their support in our effort to develop Pakistan's indigenous resources and indigenous-based energy sector, which is a first major step towards self-reliance in the energy sector. The government of Prime Minister Shahbaz Sharif is committed fully to promoting the use of indigenous resources to generate electricity. With commissioning of this 1320 megawatt coal-powered project, the total installed capacity of Thar coal-based power plants now stand at 3,300 megawatts, 2,600 megawatts at Mine Mouth in Thar, and another 660 megawatts project at Port Qasim in Karachi. Ladies and gentlemen, electricity generated by these projects is much cheaper than imported coal-based power projects. And the generation of electricity from these projects shall reduce the overall basket price of electricity for Pakistan's consumers and shall also save valuable foreign exchange for the country. We continue our plans to substitute imported coal-based power projects with Thar coal, and inshallah all new base-load thermal power generation shall be developed only on indigenous resources. The government of Pakistan will continue to support such projects that are aligned with our vision of a sustainable and prosperous Pakistan. Finally, I want to appreciate the officials of Power Division, Private Power Infrastructure Board,
for their untiring efforts to materialize Thar coal-based power projects. Ladies and gentlemen, I'll just conclude by remembering two leaders who are not here. First, as was mentioned by the Honorable Chief Minister, is Shahid Benazir Bhutto, whose vision brought this project before it actually was possible. And then in 2014, Prime Minister Shahbaz Sharif and Mr. Asif Zardari came to Thar and laid the foundation stone. So the vision, initiative, and commitment of these leaders, which has been continued by Prime Minister Shahbaz Sharif, is an inspiration to all of us. That Thar coal, which seemed a distant dream just 10 years ago, is now an undeniable reality, providing electricity, energy, and economic strength to the people of Pakistan. I'll conclude with some verses from Allama Iqbal, who said, "हो जिसके दिल में सदाकत के लिए मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे, फूंक डाले ये ज़मीनो आसमान मुस्तार और उस खाकस्तर से नया जहान पैदा करे." Naya Jahan is a new world. Ladies and gentlemen, here in Thar this afternoon, 22nd of March, you are witnessing the birth of a new world. Pakistan's energy future is visible, a new door is open, and I'm glad and delighted and grateful to Allah Almighty that I'm here with you in presence of the Honorable Prime Minister to witness this new world being born. Pakistan Zindabad. Thank you, Honorable Minister Mr. Khurram Dasgir Khan Sahab, for being on the stage. Ladies and gentlemen, we have with us the Minister of Foreign Affairs, Mr. Bilawal Bhutto Zardari. Please welcome on stage and share your thoughts with us. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें एक बार फिर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद है, थर पार्कर में मौजूद है, और हम एक बार फिर कोल पावर प्लांट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी कीमती टाइम में से आप बार बार जो है थर पार्कर के लिए टाइम निकालते रहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, आपका भी ये मेहनत की तसलसल का नतीजा है कि पहले आप 2014 में हम इधर आए थे, फिर 2019 में, 21 में, और एक बार फिर आज हम शंघाई इलेक्ट्रिक के ये जो दो बहुत ही बड़े कोल पावर प्रोजेक्ट्स है उनका इफ्तिताह किया है। एक हमारा जो थल पावर प्रोजेक्ट है उसका भी इफ्तिताह हुआ है, और साथ साथ जो ये दूसरा ओपन पिट माइनिंग का जो सिलसिला है वो भी हमने आज देखा है। वज़ीर आज़म साहब, ये जो इसका जो इम्पैक्ट है लोकली थर पार्कर के अवाम के लिए और पूरा मुल्क के लिए वो हम सब के सामने है। ये सिर्फ़ इसलिए मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत और सूबा सिंध का हुकूमत जो है वो मिल के काम कर रही हैं। थर कोल का जो बोर्ड बना हुआ है, ये शायद मुल्क का वाहिद एक ऐसा कन्फिगरेशन है जिसमें वज़ीर आला सिंध उस बोर्ड का हेड होता है और जो वाइस हेड होता है वो वफाकी वज़ीर होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक दिस इज़ अ वेरी यूनिक एग्जांपल ऑफ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत का जो मिल के काम करने का नतीजा है, और एक वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है। इसलिए हम पिछले 4 साल के लिए भी थर कोल पे मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपका
वज़ीर आज़म बनने के बाद वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत से तावन कर रहे हैं, उसके नतीजे में हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो जल्द से जल्द मुकम्मल भी हो रहे हैं और हमें आगे भी नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद जो अच्छी खबरें हैं आपको देते रहेंगे। इस इनिशिएटिव के नतीजे में जो हमारा मंशूर है, जो हमारा स्लोगन है, ख़ास तौर पे हमारे नुमाइंदों के कि थर बदलेगा पाकिस्तान, वो हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। इसी थरपारकर से और थरपारकर की कोयला से 3000 मेगावाट्स बिजली पैदा हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम का उसका फ़ायदा हो रहा है। साथ साथ इस इनिशिएटिव के नतीजे में वज़ीर आज़म साहब पिछले चंद सालों में थरपारकर का पूरा शक्ल तब्दील हो चुका है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, यहाँ का जो सेहत का निज़ाम था, तालीम के निज़ाम था, अभी भी बहुत काम करने की गुंजाइश है, मगर इस CPAC का और इस इनिशिएटिव के नतीजे में बहुत ही बेहतरी आई है। हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर में रोज़गार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात था कि हम वज़ीर आज़म के साथ मौजूद ऊपर उनके पावर का जनरेशन के कमरे में, और वहाँ एक जो आदमी मौजूद था इधर काम कर रहा है, उसका लाहौर से ताल्लुक़ था, तो किसी और का साहिवाल से ताल्लुक़ था, तो किसी और का उमरकोट से ताल्लुक़ था, और फिर थरपारकर से ताल्लुक़ था, और आखिर फिर 7 से भी जामशोरों से भी ताल्लुक़ था। तो ये भी मैं इस बात पे बहुत खुश हो रहा था कि हमने तो माजी में ये सुनते थे कि थरपारकर से लोग उठ के जो है वो कराची पहुंचते हैं या लाहौर पहुंचते हैं या कहीं और पहुंचते हैं ताकि वो रोज़गार कर सकें, और अब थरकोल की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग आके यहाँ थरपारकर पे काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ ऑब्वियसली पाकिस्तान से, हमारे जो चीनी दोस्त है वो तो चीन से आके यहाँ काम कर रहे हैं, और ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है, फ़ख्र की बायस है हमारे लिए, यहाँ के अवाम के लिए और हमारा मुल्क के लिए। और हम चाहते यही है वज़ीर आज़म साहब कि हम आपके साथ और सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के मेहनत करें, और हम जानते हैं, हमने एक्सपीरियंस भी किया है, हमने देखा है यहाँ थरपारकर में कि जब हम मिल के काम करते हैं तो उस मेहनत का फल भी मिलता है, और उस फल का फ़ायदा मेरा और आपका नहीं, इस मुल्क के अवाम को होता है। तो आपको वज़ीर आज़म साहब बहुत ही मुबारक हो। थरपारकर के अवाम को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, हमारा जो चीनी दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और ना सिर्फ ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है या जो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है, जब भी कोई अच्छा काम होता है उसका तनकीद होता है। तो कुछ साजिशी लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और नेगेटिव कमेंट्री करते हैं, जेलसी फैक्टर है इनका तनकीद के पीछे, लेकिन फिर भी वो तनकीद करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में उसका तनकीद का सबसे बड़ा जो जवाब है वो यही थरकोल का इनिशिएटिव है, यही CPAC का इनिशिएटिव है। इसलिए यहाँ ना सिर्फ ऑब्वियसली कारोबार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मगर साथ साथ यहाँ के अवाम को इसका फ़ायदा मिल रहा है। रोज़गार का तो हमने जिक्र किया, पिछली बार जब वज़ीर आज़म साहब इधर आया था थर ब्लॉक 2 पे, तो वहाँ वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद जो मकामी फ़ीमेल ट्रक ड्राइवर्स हैं और जो लोकल इंजीनियर्स हैं, आप उनसे मिले हैं। जैसे वज़ीर आला साहब कह रहा था कि जो मकामी अवाम है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए काफ़ी कोशिशें किए गए हैं। जैसे जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो इन एरियाज़ में पहले रहते थे, तो हुकूमत सिंध इसलिए उनका बिजली का बिल भरते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि अगर इनका कोयला से बाकी पाकिस्तान को बिजली पहुंचता है तो हमें भी उनका कोई फ़ायदा दिलवाना चाहिए। और इस तरीके से एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से इस कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड
रखा जा रहा है, उनका फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, पूरा सूबा को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, पूरा मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और मुमकिन सिर्फ इसलिए कि वफाक और सूबाई हुकूमत मिल के काम कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन मिल के काम कर रहे हैं, और इस बात पे हम बहुत फ़ख्र भी करते हैं। और अब हम वज़ीर आज़म साहब को थरपारकर में वेलकम करते हैं ताकि आप खुद जो है इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट भी कर सके और हमसे कुछ बातें कर सकें। थैंक यू। Thank you, Honorable Minister of Foreign Affairs, Mr. Bilawal Bhutto, for your time. Thank you. And now I would like to request the Chairman of Tharkol Block 1, Mr. Mang Dong Hai, and the Chairman of Sino-Sind Resources Limited, Mr. Lee Chigun, please come on stage and present the souvenirs to the dignitaries. Yes. Yes. Here we have the first guest. I would like to request Her Excellency Ms. Pang Chunxue, Chinese Charge d'Affaires to Pakistan. Please come on stage and receive your souvenir. Next one, I would like to request Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah, please come on stage and receive the souvenir. Moving on, I would like to request Honorable Foreign Minister of Foreign Affairs, Mr. Bilawal Bhutto, please come on stage and receive the souvenir. Please. Now I would like to request Excellency Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammed Shahbaz Sharif, please come on stage. And ladies and gentlemen, now the moment we've all been waiting for, the address by His Excellency Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammed Shahbaz Sharif. We are honored to have him among us. We look forward for your speech, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मोहतरम मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आज़म सिंध, मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब, फेडरल मिनिस्टर पावर, मोहतरम चौधरी सालिक हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर, चार्ज d'affaires मैडम पैंग, सिंध के वज़ीर एनर्जी जनाब शेख साहब, सिंध हुकूमत के वज़राए कराम, सेनेटर्स, मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली, चीनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंग डोंगाई और पाकिस्तान के मायनाज सरमायाकार, चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और कारकुनान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज एक फिर और हम सब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए
یہ ایک بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج تھر کے اس صحرا میں مزید محنت اور شبانہ روز کاوشوں سے 330 میگا واٹ کا ایک منصوبہ تھل نووا اور 1320 میگا واٹ کا ایک اور بجلی کا منصوبہ جو کہ تھل کول بلاک سے منسوب ہے، لیکن شانگھائی الیکٹرک کمپنی is the main engine behind this project. اور اس کے علاوہ کوئلے نکالنے کا ایک اور بلاک، یہ آج اس کا یہاں پر ہم سب نے افتتاح کیا ہے، اور یقین مانیے کہ تھر ایک صحرا تھا اور صحرا نوردی کے علاوہ یہاں پر ریت کے ٹیلے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ آج دہائیوں کی محنت اور دہائیوں کی پلاننگ اور مربوط حکمت عملی کی بدولت آج یہ صحرا صنعت و حرفت میں بدل چکا ہے۔ آج یہ ریتلے میدان، یہاں پر آج بجلی ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے، اور یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئلے کی بنیاد پر بجلی نہیں بننا چاہیے، وہ تھر کوئلے کے جو ذخائر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر عنایت کیے ہیں، اور یہ 100 سال تک کا ذخیرہ یہاں پر موجود ہے، جو کہ ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، وہ پاکستان کی اصل میں خوشحالی اور ترقی کے مخالف ہیں۔ اگر یہی جو بجلی یہاں پر بنائی جا رہی ہے، تقریباً جس طرح شاہ صاحب نے کہا 2200 میگا واٹ، اگر یہی بجلی اگر امپورٹڈ کوئلے کی بنیاد پر بنائی جائے تو اربوں ڈالر اس کو امپورٹ کرنے میں خرچ ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو تحفہ دیا ہے، کروڑوں اربوں ٹن جو یہاں پر مدفن ہے، اگر اس کو استعمال کر کے بجلی بنائی جا رہی ہے اور آئندہ بنائی جائے گی تو اربوں ڈالر کا کوئلہ وہ امپورٹ نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی، اور یہ صحرا مکمل طور پر یہاں پر ہر طرف ترقی، منصوبے، کارخانے وہ لگیں گے، ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پر برسر روزگار ہوں گے، اور اس پاکستان کے لیے صوبہ سندھ پہلے بھی کراچی کے حوالے سے کراچی کماؤ شہر جانا جاتا ہے۔ سندھ کے اندرون سندھ میں جو کاشتکاری ہوتی ہے اس حوالے سے پنجاب کے بعد ایک کماؤ صوبہ ہے، لیکن اب تھر میں یہ عظیم جو ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی معیشت کو آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہنچائے گا۔ لہٰذا ہمیں
اس بارے میں قطعاً کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہاں پر ہمیں بھرپور یعنی مل کر وفاق اور صوبہ سندھ مل کر سرمایہ کاری پلاننگ اور حکمت عملی کریں گے تو یقیناً پاکستان انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل جائے گا۔ آج یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسمیشن لائنز جس نے یہ بجلی جو پیدا ہو رہی ہے اس نے اس بجلی کو پاکستان کے طول و عرض میں پہنچانا ہے، اس کے اوپر کام تیزی سے رواں دواں ہے۔ بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں اس کے اوپر رتی برابر کام نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر اب کام تیزی سے جاری ہے۔ گو کہ اس میں مزید امپرومنٹ کی جا سکتی تھی، لیکن اب انشاءاللہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اللہ کے فضل و کرم سے 30 اپریل تک ٹرانسمیشن لائنز یہاں پر لگ جائیں گی، جس سے کہ جنریٹڈ بجلی جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں پہنچ جائے گی۔ اس کے لیے فارن ایکسچینج کا مسئلہ تھا، وہ حل ہو چکا، اور جو باہر سے مشینری آنی تھی وہ آ رہی ہے، اور یہاں پر وزیر پاور بیٹھے ہیں، ان کو اور ان کی جو ٹیم کو میں گزارش کروں گا کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے اس کام کو مکمل کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ بجلی موجود ہو اور وہ اس کو ہم خدا نخواستہ ٹرانسمٹ نہ کر سکیں۔ امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور 30 اپریل کی جو ڈیٹ ہے وہ ہر صورت کائنڈلی ذرا توجہ فرمائیں ذرا 30 اپریل کی ڈیٹ جو ہر صورت اس کو اچیو کیا جائے گا۔ میں یہاں پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں محترم بلاول بھٹو صاحب کو، چیئرمین پیپلز پارٹی، اور جناب مراد علی شاہ صاحب کو، اور پوری سندھ کی حکومت کو، اور منسٹر پاور کو، پوری فیڈرل جو پاور کی ٹیم ہے، پلاننگ اور خزانہ، جو بھی درجہ بدرجہ یہ تھر کول کی اور تھر کی ترقی اور خوشحالی، اصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے، اس کے لیے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر تھر کول میں پاکستانی سرمایہ کاروں کو اور چین کے سرمایہ کاروں کو، چینی حکومت کو، دراصل سی پیک کا سورج یہاں پر پوری آب و تاب سے یہاں پر چمک رہا ہے الحمدللہ، اور میں چین کی حکومت، جناب پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور NDRC اور چین کی حکومت اور شاہجی افیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود آپ نے سی پیک کو پوری طرح اس میں آپ تعاون کر رہے ہیں، اور ہماری مشکلات کو جانتے ہوئے آپ بھرپور آپ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اور سی پیک کا جو اگلا فیز ہے وہ زراعت ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ ٹریڈ ہے، وہ انویسٹمنٹ ہیں، اور وہ اکنامک زونز ہیں۔ اس کے لیے میں ضرور انشاءاللہ چینی قیادت سے ہم نے بات کی ہے، وزیر خارجہ بھی اس میں پوری طرح اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور شاہجی افیئر سے میں گزارش کروں گا کہ ان فیلڈز میں اب موقع آ گیا ہے کہ سی پیک کو ہم پوری طرح اس کو آگے چلائیں، اور انشاءاللہ یہ حکومت جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے سی پیک کو اپنے ترقی کا حصہ سمجھتی ہے۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے، اور جو پاکستان کے جو بدخواہ ہیں، جو پاکستان کی ترقی کے دشمن ہیں، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کو شکست فاش ہوگی۔ آج یہاں پر میں کوئی سیاسی حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان
वो हम सब पर मुकद्दम है। पाकिस्तान का जो वसीतर मफाद है, हमें अपनी ज़ात को एक मरतबा नहीं, अगर 1000 मरतबा भी पाकिस्तान के मफाद को कायम रखने के लिए कुर्बान करना पड़े तो ये कोई कुर्बानी नहीं, और कोई कानून और आइन से बालातर नहीं। कोई इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दों को पनाह नहीं दे सकता। अभी पाकिस्तान के अफवाज के कल ही अफसरान शहीद हुए हैं, और ये शहादत की ये दास्तान जो है वो कई दहाइयों पर मुहित है। और अब अगर हम इन दहशतगर्दों को पनाह दें और इनको शील्ड बनाएं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, ये मुमकिन नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं आखिर में एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और चीन के और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और सिंध हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि और आगे बढ़ें और थर के सहरा को मुकम्मल तौर पर एक ऐसा शानदार इलाका बनाएं कि न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग इसके ऊपर रश्क कर सकें। आखिर में मैं यहाँ पर वफाकी हुकूमत की तरफ से थर के यहाँ पर जो कारकुनान हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बासी, शाह साहब आपकी खिदमत में है, यहाँ के बासी और यहाँ के माएँ बहनें और बेटे और बुज़ुर्ग और बच्चे, उनके लिए मैं एक हस्पताल का तोहफ़ा उसका ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह, और मिलकर इसको हम यहाँ पर हम बनाएंगे। और मेरे साथ आपने मिलकर एक नारा लगाना है, बल्कि 2 नारे लगाने हैं। पाक चीन दोस्ती, आवाज नहीं आई, पाक चीन दोस्ती, पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ थरपारकर में 1650 मेगावाट के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद थे। थरपारकर में 1320 मेगावाट शंघाई इलेक्ट्रिक थर और 330 मेगावाट थल का मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस तकरीब में मौजूद थे, खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि